Hello students, MSc Geology Semester 4, Cell and Molecular Biology Specialization. We were studying Arabinose operon. I have given you the overview of Arabinose operon. Now we will look into its regulation, both positively and negatively. What are those agents which affect it positively and which affect its regulation negatively? One by one we will see. In short, I will try to simplify this. See, so topic is regulation of Arabinose operon. इसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स को समझना होगा, जैसे अरासी, कैप, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स, कैप हो गया कैटालाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, okay, cyclic AMP. There is an inverse relation between cyclic AMP and the concentration of glucose in the cell. If the glucose is high level, then cyclic AMP will be at the low level. Okay, when glucose is low, then cyclic AMP levels become high. So this you have to keep in mind. RRC, cyclic AMP, okay. These two components are involved. We will see how. पहले जान लीजिए कि L-arabinose system is not only the control of cyclic AMP cap complex activator. So this is activator. It is involved in the positive regulation of Arabinose operon. RRC functions as both repressor and activator. In the absence of Arabinose, RRC protein becomes repressor. But in the presence of Arabinose, RRC becomes activator. See how it is being done. तो आप जान लीजिए कि regulation of Arabinose operon is under the control of cyclic AMP cap complex, which is working as activator, as well as under the control of RRC protein. RRC protein, here's a result from search, affects both positively or negatively, okay, upon binding with RRC. So RRC के बारे में जान लीजिए कैसे ये कर रहा है. RRC functions as a homodimer. दो RRC मिले तब homodimer of RRC can either positively or negatively influence the expression of Arabinose operon. RRC क्या होता है? Although the interaction is via the operator and the initiator region. I will show you here in the picture first. बात ध्यान में रख लीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था Arabinose operon का स्ट्रक्चर.
ARA-O1 is the operator for ARA-C and ARA-O2 जो कि दूर में है, that one is operator for ARA-BAD structural genes. See in this picture, पिछले वाले पिक्चर को याद कीजिए अगर आपको ध्यान में हो तो ARA-2 जो है, ARA-2 और ARA-O1 के, ARA-O2 और ARA-O1 के बीच में promoter for ARA-C is there, but ARA-O2 is the operator for ARA-BAD and ARA-O1 is the operator for ARA-C, which is here, ARA-C gene. स्मॉल ए होगा, जीन बता रहे हैं तो इट विल बी स्मॉल ए. यहाँ भी ARA-O2 के बाद इधर ARA-C जीन है, बीच में प्रमोटर है. ARA-C. ARA-C क्या कर रहा है? ARA-C एक प्रोटीन है जिसके पास दो डोमेन होते हैं हर प्रोटीन ARA-C के पास, और वो दो ARA-C मिलके होमोडाइमर ऑफ ARA-C बनाए. होमो तो कितने डोमेन हो गए इसमें? दो डोमेन इसमें, दो डोमेन इसमें. तो होमोडाइमर ऑफ ARA-C हैज 4 डोमेन्स. In each ARA-C monomer, there are 2 domains. Okay. One is DNA binding domain. DNA binding domain through which it binds to the DNA. The second one is dimerization domain. इससे Arabinose बाइंड करता है डायमेराइजेशन डोमेन में. तो होमोडाइमर ऑफ ARA-C के पास हो गए 4 डोमेन, DNA बाइंडिंग डोमेन, दो डायमेराइजेशन डोमेन. ओके. Dimerization domain is responsible for Arabinose binding. What happens after Arabinose binding is there is conformational change. ARA-C undergoes conformational change upon Arabinose binding. Okay. तो यह conformational change Arabinose binding की वजह से आता है, और Arabinose binding की वजह से इसका DNA binding डोमेन की प्रॉपर्टी बदल जाती है ARA-C की. ओके. ये ARA-C के बारे में आपको बता रहे हैं. दूसरी बात ध्यान रखने की योग्य है कि ARA-C can also negatively auto-regulate. This I will discuss in the last. But listen here that ARA-C can also negatively auto-regulate its own expression. Okay, when the concentration of ARA-C becomes very high, ARA-C synthesis is repressed through binding of dimeric ARA-C to the operator region. Dimeric ARA-C यानी homodimer ARA-C binds to the operator region of ARA-C. ARA-C का जीन यहाँ पर है. ओके. तो operator region of ARA-C is ARA-O1. ARA-O2 is the operator region for ARA-BAD. Okay. Now see how it is negatively regulated. First, we will discuss this. Negative regulation of L-Arabinose operon via ARA-C protein. See, point to be
noted here is that there are conditions because E. coli has preferred choice for its mm, energy giving compound. So E. coli will prefer glucose to harvest the energy in it. If glucose is not there, then it will look for other compounds which can give energy to it. And one such compound is arabinose. Okay. So now consider this. When glucose is not there, no, first consider this. When arabinose is not there, when negative regulation of Arabinose operon will be required. If arabinose is not there in the medium, then why the gene products will be produced, which are involved in arabinose catabolism. So when arabinose is absent, then there is negative regulation of Arabinose operon. That time, those gene products which are required for arabinose catabolism will not be produced, will not be expressed. The structural genes will not be expressed. Arabide genes will not be expressed when arabinose is absent. Because cells do not need Arabide products for breaking down arabinose if arabinose is not there in the medium. So in this case, dimeric RAC, homodimer of RAC, acts as a repressor. Okay, how? See, you can see this picture clearly. Can you see this? Okay. RAC का homodimer RAC का एक मोनोमर यानी एक RAC, here you can see in this picture, see ये ब्लू वाला जो है structure, it is binding to, and this is domain, dimer, इस तरह के सिंबल से इसको शो किया गया है. दिस इज, ये डिप्रेशन जो है इसको समझ लीजिए अराबिनोज बाइंडिंग डोमेन या डायमेराइजेशन डोमेन. यहां पर अराबिनोज बाइंड होगा and this domain it will bind to the DNA here. Okay. So when it is acting as repressor in the absence of arabinose, RAC, one monomer binds to operator. One monomer, this monomer is binding to the operator of Arabide gene. That is, that operator's name is ARA-O2. At the same time, because this is in a homodimer condition, it will only function in this state, homodimer state. अकेले RAC ये काम नहीं कर सकता, दो RAC मिलके ये काम कर रहे हैं. So at the same time, another monomer binds to a distant DNA. दूर का DNA पर वो bind किया. कितना दूर है? And that binding site of the DNA is ARA-I1. ठीक है, दूर है. अब देखिए ARA-I1 यहाँ है और ARA-O2 यहाँ है. तो अगर कोई कंपाउंड यहाँ पर बाइंड कर रहा है and the same compound at the same time is binding to ARA-I1 also, then it will form a loop. See here, that's why this loop is there, because homodimer of RAC is binding with one monomer is bound to DNA ARA-O2 operator region, and another monomer of this homodimer RAC is binding to a distant site which is upstream to the promoter of Arabide
प्रमोटर ऑफ अराबाइड के अपस्ट्रीम है, and that site's name is ARA-I1, इनिशिएटर रीजन। ओके, आप कंफ्यूज नहीं करोगे, प्रमोटर, ऑपरेटर, इनिशिएटर, एनहांसर, बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये सब, ठीक है। ARA-I1 से बाइंड किया, ARA-O2 से भी बाइंड किया, सेम होमोडाइमर with its different binding domains, and as a result of that there is a formation of this DNA loop. Okay, and because of this formation of the DNA loop, this orientation blocks RNA polymerase. This is RNA polymerase. It is blocking the RNA polymerase to dock over here on the promoter region of Arabide. Because of this loop, DNA आगे भी होगा, इसके बड़ा loop है, RNA polymerase cannot access the site promoter for the Arabide. So in the absence of Arabinose, when Arabinose is not bound here, this homodimer binds to the DNA only at two distant sites, and as a result of that, a loop formation occurs. Okay, and this orientation blocks RNA polymerase from binding to the Arabide promoter. Therefore, transcription of structural genes of Arabide is inhibited. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठ ही नहीं पाया जो कि ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा अराबाइड जीन्स का? नहीं होगा। कंडीशन क्या था? व्हेन अराबिनोज इज नॉट देयर इन द मीडियम। ओके, दिस इज द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ Arabinose operon. क्लियर? इतना सिंपल है, ये छोटा है, निगेटिव रेगुलेशन हो गया। अब पॉजिटिव रेगुलेशन में आइए, इसको मिटा दें स्टूडेंट्स। पॉजिटिव रेगुलेशन थोड़ा बड़ा है कि अराबिनोज के प्रेजेंस में अब कैसे इसका यह स्ट्रक्चरल जीन्स का, अराबाइड स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। ओके, दूसरा कंडीशन है ग्लूकोज, whether glucose is present or absent. If, because the preferred choice is glucose, so if glucose is there, then cell will utilize its glycolysis pathway for the energy production first. It will not use this Arabinose operon's gene products, those enzymes. If glucose is present, suppose glucose is not there, glucose is absent, but Arabinose is present in the medium, then positive regulation occurs. When glucose is missing, not there, but Arabinose is present, अब तो सेल को एकदम जरूरी हो गया, ग्लूकोज ने एनर्जी कहाँ से लेगा ये? तो अराबिनोज को ब्रेक डाउन करना है, तो अराबिनोज के जीन प्रोडक्ट्स एक्सप्रेस होने चाहिए। तो अंडर दिस कंडीशन पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ अराबाइड टेक्स प्लेस। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या हो रहा था? अराबिनोज इज एब्सेंट इन दिस केस, absent, and glucose is present. But when glucose is absent and Arabinose is present in the medium,
then positive regulation of Arabide takes place. तो आप ये समझ ही गए आरआरसी का स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर की वजह से जो यहाँ पर उसका रोल है वो आप समझे। अब देखिए उसी स्ट्रक्चर का रोल यहाँ पर भी है, क्योंकि आरआरसी कैन बाइंड विथ through its dimerization domain arabinose. Arabinose acts here as inducer. When arabinose is bound to RRC, then RRC homodimer works as activator. When arabinose is not bound to homodimer of RRC, then RRC works as repressor, which you have seen here. Here, arabinose is not bound. So for the positive regulation, occurs by two agents, via RRC and via cap cyclic AMP complex. ठीक. In this case, cap cyclic AMP complex represses this operon. See how it is going to do. First, I will discuss via RRC. Okay. एक बात जान लीजिए, when arabinose is present, both of these RRC and cap cyclic AMP work, cap cyclic AMP and RRC both work together and functions as activator when arabinose is present. See via RRC कैसे कर रहा है. RRC acts as an activator in the presence of arabinose. Now you know this. Okay. RRC undergoes conformational change when arabinose binds to the dimerization domain of RRC. This also I have told you that arabinose undergoes a conformational change. उसका structure change हो जाता है. As a result, RRC, arabinose ठीक है, क्लास ले रहे हैं. कहाँ पर थे? हाँ, यहाँ थे. RRC वाया RRC कैसे हो रहा है? पॉजिटिव रेगुलेशन. ठीक. So there is conformational change when RRC binds with arabinose in the conformational change in the RRC. As a result, RRC arabinose complex via RRC arabinose complex falls off from RO2. इस conformational change की वजह से इसके DNA binding capacity change हो गया, structural 3-dimensional structure. So DNA binding domain इसका जो है वो RO2 से bind नहीं करता है, fall off कर जाता है. See, when arabinose is bound here, then this binding of arabinose arabinose with the RO2 operator region, it falls off. Okay, so how it is being done? Because when after the binding with the arabinose, its
3-dimensional conformation is altered, changed because of that. ठीक, तो अगर ये फॉल ऑफ कर जाएगा, यहां से फॉल ऑफ करके यहां बैठ गया, क्योंकि पहले तो क्या था, अराबिनोज एब्सेंट था तो ये स्विच ऑफ था। अब अराबिनोज मीडियम में आ गया, ग्लूकोज यूटिलाइज कर लिया इसने, ग्लूकोज डिप्लीट हो गया मीडियम में, तो अब ये अराबिनोज का जीन को स्विच ऑन करना है। तो पहले वाली स्थिति तो यह है कि अराबिनोज के स्ट्रक्चरल जीन्स, ओपरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। बट द मोमेंट Arabinose, when glucose level falls down, and if Arabinose is present in the medium, then there is a requirement of the expression of Arabinose structural genes. Okay, so after binding of Arabinose to ARA-C, it falls off from the operator of ARA-BAD, that is ARA-O2. It leaves it. As a result of that, this loop formation, the loop is not there. This loop also breaks. Okay, डीएनए ब्रेक नहीं हो रहा है, लूप ब्रेक हो रहा है, यानी ये लूप छूट गया, डीएनए सीधा हो गया. Distant regions are not close to each other. Hence, Arabinose, ARA-C Arabinose binds. Here, ARA-C homodimer is bound to two distant DNA sites. After binding with the Arabinose, this loop is resolved. Then Arabinose, ARA-C complex binds to nearby sites on the DNA segment. One is ARA-I1 से तो पहले से बाउंड था ही, दूसरा जो है ARA-I2 से बाइंड कर गया, होमोडाइमर का दूसरा मोनोमर, after conformational change, after binding of Arabinose to ARA-C. ओके, तो इस तरह से टू एडजेसेंट डीएनए साइट्स ARA-I1 एंड ARA-I2 पर ये बाइंड कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अराबिनोज. कौन बाइंड किया? ARA-C. किसकी फलस्वरूप? इसके फलस्वरूप लूप जो है ब्रेक कर गया. अब लूप ब्रेक कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट फाइंड एनी हिंड्रेंस टू रीच the promoter region of ARA-BAD. Now it will reach here. It can reach here. But this ये बहुत नखरे वाला है RNA polymerase. But this also requires the recruitment of promoter to promote recruitment of RNA polymerase to the promoter region of ARA-BAD. आ तो सकता है, लेकिन इसको लाने वाला भी चाहिए यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए. ओके, so this recruitment is also facilitated by ARA-C Arabinose complex. ठीक, here you can see one of the monomers is binding to ARA-I1, and the remaining monomer binds to ARA-I2. आप कह सकते हैं कि binding of ARA-C to ARA-I2 is induced by Arabinose, and this is allosterically favorable. क्योंकि पहले दूर में बाइंड किया, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा. दिस इज हाई एनर्जी स्टेट, दिस इज लो एनर्जी स्टेट. ये लूप बना हुआ डिस्टेंट डीएनए पास में आया तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ा, एनर्जी खर्च हुई.
लेकिन यह जो है, यह स्थिति जो है दूसरी वाली, इसको छोड़ दिया, तो दिस इज मोर एलोस्टेरिकली इनर्जेटिकली मोर फेवरेबल एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय अराबिनोज। ठीक, जिसके फलस्वरूप एक अरासी मोनोमर, क्योंकि अरा I2 पर बाइंड किए हुए हैं, सो दैट अरासी अराबिनोज complex, that Arasi monomer is placed near Arabad promoter. This is the promoter of Arabad, it is near to it in this configuration. And this helps in recruitment of RNA polymerase to the promoter to initiate the transcription. Okay. So via Arasi, it is now positively getting regulated. कंडीशन क्या है? अरेबिनोज होना चाहिए, ग्लूकोज कम होना चाहिए मीडियम में। ठीक, अरेबिनोज मीडियम में है ही नहीं, तो इसको स्विच ऑफ करके रखा गया है स्ट्रक्चरल जीन्स को। नाउ सेकेंड वन, दिस इज द पॉजिटिव रेगुलेशन वाया अरासी। दूसरा पॉजिटिव रेगुलेशन वाया कैप्स साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक काम कर रहा है, कभी कोई एक काम कर रहा है, कभी दूसरा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। वन सेकेंड, हेलो, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। बोथ वर्क टुगेदर। कैसे? कैप जो है यह एक तरह का ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। कब? जब ई कोलाई का जो प्रेफर्ड शुगर है, दैट इज ग्लूकोज, वह नहीं है तब। दिस कैप acts as a transcriptional activator only in the absence of E. coli. E. coli's preferred sugar, that is glucose. When glucose is absent, as you already know, that there is inverse relation between the level of glucose and the level of cyclic AMP. If glucose is high, cyclic AMP level will be low. आप इमेजिन कीजिए ग्लूकोज नहीं है तो साइक्लिक एएमपी विल बी हाई, cyclic AMP level will be high, that means cap cyclic AMP complex also will be high, level will be high in the absence of glucose. Okay, so this high level of cap protein and cyclic AMP complex, you can see here, binds to cap binding site. ठीक है, कैप अकेले कैप बाइंडिंग रीजन से बाइंड नहीं कर सकता है। कैप अगर साइक्लिक एएमपी के साथ कॉम्प्लेक्स्ड है, देन ओनली इट कैन सिट ओवर कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन डीएनए। तो जब साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है तो इसका ग्लूकोज कम है, साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है, साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है तो कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स का भी लेवल हाई होगा। ठीक, here cap binding site, you can see here, this cap binding site is between ARA I1 and ARA O1. Binding of cap CAMP complex is responsible for this, is responsible for opening up the DNA loop between ARA I1 and ARA O2. ARA I1 and ARA O2, ठीक, ARA इस लूप को खोलने में
दो किरदार हैं, एक तो अरेबिनोज, दूसरा व्हेन साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स इज बाउंड टू कैप बाइंडिंग रीजन। इस कैप बाइंडिंग रीजन पर अगर रीजन पर दिस कैप बाइंडिंग, अभी तो लूप बना हुआ है, कैप बाइंडिंग रीजन पर कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स अगर बाइंड कर गया तो दिस लूप विल ओपन। तो यहां पर दोनों कंडीशन मीट हो रहे हैं, एक अरेबिनोज भी नहीं है, दूसरा कैप साइक्लिक एएमपी का लेवल भी हाई है, तो कैप बाइंडिंग डोमेन से रीजन से, डोमेन कहना ठीक नहीं होगा, रीजन से डीएनए में जो है उससे कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स बाइंड कर गया। अब ये दोनों मिलके, ये दोनों का रोल है टू ओपन दिस लूप। लूप इज ओपन। See, Arabinose is bind to this Arac. This also is contributing in opening the loop. And when cap CMP complex binds to cap binding region, that also is opening the loop. ठीक, तो इसकी वजह से लूप जब ओपन हो जाता है तो एरा I2 और एरा C के बीच में बाइंडिंग एफिनिटी भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ इट क्रिएट्स ए कंडीशन of recruiting RNA polymerase to this promoter region of Arabide. तो ये तीन फायदे हुए उसको, और अराबाइड पर रिक्रूट हो गया साइक्लिक आरएनए पॉलीमरेज, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ अराबाइड। ओके, तो कहने का मतलब हुआ अरासी प्रोटीन at ARA-I2 is promoting RNA polymerase to bind to Arabide promoter to switch on the expression of Arabide required for metabolizing L-arabinose. So this is the mechanism of positive regulation of Arabide. ठीक है, तो ये हो गया इसका रेगुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को, लेक्चर को दोबारा सुनना और ध्यान से सुनना, पिक्चर सामने रख करके एक एक लाइन को समझना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद करने के, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे आराम से। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, you can revise it. Another important aspect of this operon is auto-regulation of ARAC. तो ARAC कितना important है in negative regulation and positive regulation, लेकिन इस ARAC को रेगुलेट कौन करेगा? ARAC को रेगुलेट ARAC खुद करता है, ऑटो रेगुलेशन ARAC. So here the fact is the expression of ARAC is negatively regulated by its own protein product ARAC. चूंकि ARAC पर DNA binding domain है, when ARAC is in excess, this protein is in excess, then when ARAC is in excess, the excess ARAC binds to the operator for ARAC gene, और ARAC gene का operator कौन है? ARA-O1. तो excess ARAC binds to ARA-O1, यहां पर बाइंड कर जाएगा। ARA-O2 तो ऑपरेटर है,
अराबैड का, ARA-O1 ऑपरेटर है ARA-C का। तो ARA-O1 पर एक्सेस ARA-C बाइंड, ठीक। At high ARA-C level, it binds to ARA-O1, and this ARA-O1 is in vicinity of the promoter for ARA-C gene, ये प्रमोटर है ARA-C जीन का। जब एक्सेस में यहाँ बाइंड कर गया, suppose this is ARA-C, then because of this protein DNA binding here at the ARA-O1 position, then RNA polymerase cannot bind to promoter region for ARA-C. It will cause a hindrance for the RNA polymerase to bind to the promoter for the ARA-C. And it physically blocks the RNA polymerase from accessing the ARA-C promoter. Therefore, ARA-C protein inhibits its own expression at high concentrations. This is the autoregulation of ARA-C. Okay. अब इसका यूज क्या है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैक्टीरिया किस तरह से अपने ओपरॉन जीन को एक्सप्रेशन करा रहा है. But we use this operon in the laboratory. If you replace these Arabid structural genes with your gene of interest, कोई एक जीन यहाँ पर हम इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके अराबिनोज का स्ट्रक्चरल जीन्स को, बाकी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी एलिमेंट सेम है, इस जीन को रिमूव करके हम यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिए, तो क्या होगा? दैट expression of that gene of interest will be dependent on the Arabinose presence or absence. Arabinose देंगे तब वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, Arabinose हटा दिए तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेस कर जाएगा. तो इस तरह से आप डिजायर्ड अमाउंट एंड डिजायर्ड लेवल पर अपने जीन प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग. इंसुलिन का जीन लगा दिए, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जीन लगा सकते हैं, एनी जीन ऑफ योर इंटरेस्ट यू कैन प्ले विथ इट. इफ यू गिव Arabinose, then that gene will be expressed. ठीक. तो L-Arabinose operon has been a focus for research in the molecular biology since long and has been investigated extensively for its genetic, biochemical, physiological, and biotechnical levels. And this L-Arabinose operon is being commonly used in the protein expression system. ठीक है, as the, क्योंकि Arabid promoter को यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस टारगेटेड एक्सप्रेशन अंडर टाइट रेगुलेशन. रेगुलेशन भी टाइट है यहाँ पर, क्योंकि जो रेगुलेशन हो रहा है अराबिनोज जीन प्रोडक्ट का, उसी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से आपने इसको रिप्लेस किया उसका भी रेगुलेशन इसी तरह से होगा. तो इट इज टाइटली रेगुलेटेड. टाइटली रेगुलेटेड अराबिनोज का, अराबाइड जीन्स का भी था टाइटली रेगुलेटेड, या दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिए तो वो भी टाइटली रेगुलेटेड हो गया वहां पर. एंड यू कैन स्टडी देम. ठीक है. By using this Arabide promoter to a gene of interest, the expression of target gene can be here solely regulated by Arabinose. ठीक है. So students, this topic is over now, and by this unit 1 of this paper is finished. All these 3 operons
lac operon, tryptophan operon, and Arabinose operon we have discussed. In the next class, we will start with the unit 2 of this paper. Thank you.